Hello students, welcome back to my channel. It's me, Kanak Rastogi, and firstly, and very happy Holi to all of you. Students, here's the last I have to taught the types of demands. Okay, so let's see what the types of demands are. Okay, first is individual and market demand. Second, autonomous and derived demand. Short term and long term demand. Direct and indirect demand. Okay, so firstly, we are going to the individual and market demand. So let's see what the individual demand says that the quantity of demands a consumers is willing and able to purchase at every possible price during a specific time period. Okay, that is known as individual demand. Okay, I hope you are able to see and able to understand. So now I'm going to turn the page. Now here's the marketing demand. Marketing demand is the total quantity demanded by all consumers in a markets for a given goods. That is known as marketing demand. I hope कि आपको clear है. Then next, that is autonomous demand. Let's see what the autonomous demand says. Here, the demands for a product that is not associated with the demands of others product. Okay, that is known as autonomous demand. Let's see the other, that is derived demand. The demands for the goods and services that result from the demand for a different or related goods or services. That is known as derived demand. Let's see the other demands, that is short term demand. In that, the demands refers to how people will immediately react to the price change while elements are fixed. Okay, for example, if you are not going to understand the definition, well, you have to see the example, and it's most important to give the examples of these demands. Okay, here if the demands for the product like tea, coffee, jams, sugar, all that, etc., are known as short term demand. ओके, कुछ टाइम तक बढ़ी हुई डिमांड को जो कि इमीडिएटली रिएक्ट किया जा सके उसको ही हम शॉर्ट टर्म डिमांड कहते हैं. नाउ सी द लॉन्ग टर्म डिमांड किसको कहते हैं. डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ गुड्स और सर्विसेज एट द सर्टेन प्राइस. That is known as long-term demands. Now turn the page. Now here's the direct demand. Let's see what the direct demand says. The demand for the final goods, food, clothing and sales of phone are examples. Okay, that is known as direct demand. किसी भी सामान को डायरेक्टली परचेज करना, तुरंत पेमेंट करके किसी भी सामान को खरीदना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट. और उसी का रिवर्स इनवर्स हो जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट. लेट्स सी इनडायरेक्ट डिमांड क्या कहता है. डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड्स आर सेम. जो डिराइव्ड डिमांड हम लोग ने पीछे पढ़ा है और इनडायरेक्ट डिमांड जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं वो लगभग सेम है या तो सेम है. लेट्स सी कैसे सेम है. द गुड्स और सर्विसेज डिमांडेड और needed for manufacturing the goods and satisfying the consumers indirectly, that is known as indirect demand. Okay, let's see the law of demand. Law of demand is the most important topic in the aspect of your examination, so be concentrate on the law of demand. Now I'm going to start. What is the law of demand says? The law of demand states that other factor being constant,
ओके, दैट यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा जो कि क्या आपको बताता है, दैट इज सेट्रिस एंड प्रीवियस, प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे जो प्राइस एंड क्वांटिटी है वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। यू कैन सी द डायग्राम्स हियर आई मेक। दिस इज द प्राइस, ओके, दैट इज P1, P2, P3। ये एक तरीके का ग्राफ है जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करता है हाउ द लॉ ऑफ डिमांड फॉलो या फिर कैरी आउट इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन जिसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं एंड दिस वन इज वाई एक्सेस। ओके, सो यहाँ पे P1, P2, P3 यहाँ पे मेंशन है। P1, P2, P3 ये आपको प्राइस शो करता है, ठीक है, और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 क्वांटिटी डिमांड को शो करता है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये डिमांड ऑफ कर्व मतलब कि फ्लो ऑफ इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट को शो करता है। आप देख पा रहे होंगे कि P1 जब बढ़ रहा है, P1 हमारा Q1 के पास है, एंड देन जब P2 हमारा इंक्रीज कर रहा है, P2 इंक्रीज फ्रॉम P1, then you can see that quantity will also increase. Okay, both aspects are equal to that, related to that, यही आपको मेंशन करने की कोशिश किया है। जब P3 बढ़ रहा है तो हमारा Q3 भी बढ़ रहा है, तो इसका यही मतलब हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस भी घटेगा। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। एक बहुत अच्छे एंड फनी वे में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल फॉल। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा। फॉल मतलब घटना। व्हेन, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज देन द डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। और जब प्राइस डिक्रीज होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको मेरा बनाया हुआ डायग्राम एंड मेरे ये फनी सी शॉर्ट टर्म समझ में आया है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर। Now you have to study the assumptions of demand, law of demand. This will be continued to the other part of the video. Thank you for watching.